वेलकम एवरीवन। हम लोग आज बात करेंगे कॉन्केकैफ टीम्स और ओशियानिक टीम्स के बारे में एंड उन लोगों के रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या है इस वर्ल्ड कप 2026 जो यूएस कनाडा और मेक्सिको में होस्ट हो रहा। सी कॉन्केकैफ टीम विच कंसिस्ट ऑफ कोर्स कनाडा, यूएस, Mexico, Panama, Haiti, Curaçao, who is playing their first World Cup, and from the Oceanic team, you're gonna see New Zealand due to automatic qualification from that region for sure. But उन लोग की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या कर सकते हैं ये लोग ये टूर्नामेंट में, लोग का डीप रन चांसेस क्या है? सो लेट्स डीप डाइव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड what to expect from them, right? Let's start with United States. See, they are hosting this tournament, and Mauricio Pochettino, a well credential holder in football world, is the manager. Okay, he managed Messi, Neymar, and Mbappe, if you guys remember, in that PSG, right? And he did good job with Chelsea. Tottenham took Tottenham to the Champions League final as well. So let's see how he gonna set this United States team. तो देखो, यंग और एनर्जेटिक स्क्वाड है जो अपने प्राइम में एंटर कर रही है अभी। आई मीन यस, नोटेबल नेम्स ऑफ कोर्स गोना बी क्रिस्टियन पुलिसिक, मैकेंजी है जो क्रेजी फॉर्म से आ रहे जुवेंटस के, टेलर एडम्स है जो यूएस में वापस खेल रहे, जियो रैना है। रिमेंबर जियो रैना हैड लॉट ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स विद ब्रेक होल्डर, द प्रीवियस कोच ऑफ यूनाइटेड स्टेट, एंड एंथोनी रॉबर्टसन फ्रॉम द फुलहम। और क्या गोल मारा यार उसने वार्म अप मैच के लिए। मैं था शिकागो में ही हुआ था वो मैच। आई वेंट टू सोल्जर फील्ड एंड आई सॉ दैट मैच एंड ही स्कोर्ड एब्सोल्यूट बैंगर अगेन। एंडी रॉबर्टसन, एंथोनी रॉबर्टसन इज दैट गुड। देखो, स्ट्रेंथ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है टीम की, मिडफील्ड एनर्जेटिक है लोगों की, फास्ट ट्रांजिशन करते, होम कंडीशन के से वेरी वेल अवेयर है, और एथलेटिज्म बहुत अच्छा है इस लोग में। एंड देखो, like every good thing, there is always a downside. Finishing, despite they have Haji White, despite they have Ballot, अच्छा अच्छे स्ट्राइकर्स है, क्रिस्टन पुलिसिक खुद अच्छे फिनिशर है, बट स्टिल फिनिशिंग चांसेस एक्सेप्ट पुलिसिक में को थोड़ा मसला दिखता है। कंसिस्टेंसी अगेंस्ट एलिट नेशन, बिकॉज लास्ट नेदरलैंड्स के अगेंस्ट रूल्ड आउट हो गए थे ये लोग। आई मीन दे लॉस्ट द गेम अगेंस्ट नेदरलैंड इन 2022 वर्ल्ड कप, इफ यू रिमेंबर। बट ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, होम वर्ल्ड कप है, सपोर्ट अच्छा रहेगा इन लोग का, तो दे शुड एटलीस्ट रीच क्वार्टर फाइनल्स, राइट? दैट विल बी अ ड्रीम सिनेरियो एक्चुअली, राइट, इफ दे रीच। बट इन लोगों की प्रोडिक्शन मेरी राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल्स की होगी। That's their ceiling, in my humble opinion. But let's say, World Cup is a tournament of surprises, and who knows? They will pull another. They might pull good results out from the draws they have. So let's see what gonna happen. Then there is Mexico. भाई साहब, रिमेंबर मेक्सिको, कोलंबिया और लैटिनो कंट्रीज जो है ये वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में अनबिलीवेबल सपोर्ट रहने वाला है इन लोगों का, अनबिलीवेबल सपोर्ट। बिकॉज इन यूनाइटेड स्टेट, more than 40-45% of crowd you gonna see across the 52 states, they speak, uh, there is a Latino culture, there is Spanish as first language, ऐसा basis चलता है यहाँ पे। तो they gonna be crazy support from Mexico of course, एंड एडिसन अल्वारेस है यहाँ पे, राहुल निमेनेस है, मेरे आँख पे बहुत ज़्यादा, इज प्रिफलिक नंबर 9, ही रिमाइंड्स मी काइंड ऑफ लाइक चिचरिटो, बट नॉट एग्जैक्टली प्रोफाइल बट इम्पैक्ट फॉर श्योर। एंड देयर इज द गोट ऑफ द कीपर ओचुआ एंड संतियागो गिमेनेज भी है यहाँ पे। बट गुड गुड है, टूर्नामेंट एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी एंड ह्यूज 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 फैन सपोर्ट रहेगा ये लोग पे। And yeah, despite they have Rahul Jimenez with them, still world class attackers lack करता है, डिफेंसिव मिस्टेक्स करती है लोग, बिकॉज ये लोग फिजिकल हो जाते हैं टाइम ऑफ। बट होम एडवांटेज है, दे शुड बी
reaching a quarter final, hopefully realistically सीलिंग इन लोगों की ड्रीम सिनेरियो हो जाएगी अगर ये वर्ल्ड सेमीफाइनल्स में चले गए यार. Because remember Simpson, long back in 90s has predicted there will be a World Cup hosted in States, and Portugal and Mexico are the two opponents, and apparently Portugal wins it. So let's see if they had the dream run, right? For sure. And then there is Jesse Marsh, Canada, right? And remember that Jesse Marsh is American. He uh, he was a coach for Leeds United. He did good job there. Now he'll be having players like Alphonso David, Jonathan David, uh, Joran, Stephen. ये अच्छे प्लेयर्स है. स्टीवन इज अप एंड कमिंग फॉर श्योर. 22 का रिजल्ट, वर्ल्ड कप 22 का रिजल्ट लोगों का बहुत ऑन एंड ऑफ था. बट यू नो ये स्पीड, ये प्लेयर्स का नाम सुने तो क्या चीज दिखती ज्यादा. काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल सकते हैं प्लेयर्स, एलीट स्पीड्स है एंड डेंजरस इन ट्रांजिशंस. सो एंड ऑफ कोर्स Canada is up and coming in football. अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, बट दैट बीइंग सेड स्क्वाड डेप्थ की कमी है इन लोगों के पास, एंड डिफेंसिव लैप्सेस है इन लोगों के, एंड इन एक्सपीरियंस इन नॉकआउट गेम्स, राइट. But realistic expectation is a round of 16, and because could Canada become the best performing host nation, वो देखना है. Because Canada, given three host nation, Canada, Mexico and USA, my bet is first on Mexico, then comes Canada if possible. उन लोगों का draw सही है, then let's see where USA team goes, right. Then there is a dog horse sitting in front of us, Panama. I mean, hear this player's name: Blackman, Cesar Blackman, Jose Lewis, and Alberto. ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं लोगों के पनामा के. एंड डिसिप्लिन अच्छा है, टीम केमिस्ट्री बहुत टाइम से खेल रही है लोग. और डिफेंस, ये टीम डिफेंस फर्स्ट टीम है. एंड बट दिस टीम seriously lacks star powers, difficult scoring against the top team, of course. But if they reach round of 16, round of 32, I think that's a good result for them. And then there is from New Zealand, from Oceanic. When you hear New Zealand, you're gonna say Chris Wood, right? जो नॉटिंगम फॉरेस्ट के वास्ते खेलते हैं, बिग टॉल नाइस स्ट्राइकर. और बहुत चीज ये बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. यस, ही गोना हैव सपोर्ट फ्रॉम मार्को, ही गोना हैव सपोर्ट फ्रॉम केसेस, बट all the eyes will be on Chris Wood, and let's see how, um, I mean, how this team gonna set up, because this team is physical, good on set pieces, organized, अच्छा रहते हैं. But of course, uh, apart from Chris Wood, they lack elite talent for sure. Scott Deb भी बहुत मसला है लोग का, but round of 32 is what I see if the Chris Wood clicks. Of course, then there is first timers here. Haiti, one of the greatest stories of qualification, returning to World Cup first time since 1974. Damn, 1974 के बाद first time return कर रहे. That means this team will have a lot of passion, speed, attacking mentality, but solid hockey, because they have players like Dixon, they have players like Fantrizi. तो अच्छे प्लेयर्स है ये लोग. एंड लेट्स सी हाउ दे गोना सेट दिस अप दिस टाइम अराउंड, बिकॉज डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन में मसला होगा और लैक ऑफ एक्सपीरियंस है. बट आई मीन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या बोलूँ मैं अब, ये टीम का हेती का ग्रुप स्टेज एटलीस्ट विन अ मैच, दैट विल बी ग्रेट फॉर देम. बट लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टीम ऑफ आवर लिस्ट, विच इज Curaçao. Perhaps the biggest story. Curaçao qualified for the first World Cup ever. They have built a squad full of players developing in, I mean, Dutch system. तो ये प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डच सिस्टम से लाए सो इन लोग. अगर इनके प्लेयर्स भी नहीं थे तो उन लोगों को नेचुरलाइजेशन कराए, जो आई मीन जो सेकंड पासपोर्ट सेकंड सिटीजन रह रहे ना, लोगों को ला के नेचुरलाइजेशन कराए. फॉर एग्जांपल द ब्रदर्स, बुकाना ब्रदर्स, लियोनार्डो एंड जुनो एंड एलबी रूम, ये अच्छे प्लेयर्स है ये लोग. यूरोपियन टैलेंट है ये प्लेयर्स के अंदर, बिकॉज एज आई मेंशन यू, दे प्ले इन डच सेकेंड लीग, थर्ड लीग.
tactical disciplines है, but again this is their first time, so limited squad depth है or tournament experience that gonna hurt them. And again, group stage, if they win a match, that will be fantastic for this. So most likely my standing to reach a quarterfinal at least is first I give chance to Mexico, US, Canada, then I'll say Panama, New Zealand, Haiti, and Curaçao. And the best players I feel that gonna perform well. Of course, Christian Pulisic hai, Alphonso Davies hai, and Jonathan David hai, and Santiago Gimenez अच्छा है. Chris Wood from New Zealand for sure. But let's see how things will set up, and I hope Canada pulls their socks up and surprise uh, a lot of them, and Curacao at least can pull some upset or something, right? That will be great. So yeah, so let's see how this team's gonna set up, and how this team gonna progress in future games. But yeah, all the best to all this team, and I just can't wait more 3 days to go for the World Cup. So see you guys later.